कितने लोग हैं, चलो हाथ उठा के मैं बताऊं कि कितने लोग हैं आप में से जो चाहेंगे कि हम लोग ये बेस्ट ऑफ द क्रिएशन बने? चलो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन। सो एंड दूसरा एक दलील हम आपको देते हैं, दूसरी दलील देते हैं, लेकिन ना हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, हम उसके ऊपर गौर नहीं करते कि मुसलमानों के लिए भी दावत है, मुसलमान के लिए भी दावत है। इसका जो दलील है, कोई बताएगा? वो है अजान की दुआ। अजान के बाद में हम पढ़ते हैं ना दुआ, तो वो दुआ ऐसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या क्या, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिद दावत ताम्मा, है ना? तो दावत वर्ड आता है, वो किसके लिए आता है? मुसलमानों के लिए आता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये सब चीजें हैं। एंड कोई कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ट्रूथफुल टू अवरसेल्फ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, की पॉइंट्स टू एवरी फील्ड। यस यस यस, ये हम पूरी चीज करेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर हम ये उखरिजत लिन्नासी है, उखरिजत लिन्नासी मतलब हम पूरे लोगों के लिए पैदा की गई है, तो हमें कितने लोगों को इस वर्कशॉप में लाना चाहिए? हम अकेले आएंगे कि लोगों को लेके आएंगे इस वर्कशॉप में? बताइए तो जल्दी बताओ, कितने लोग हैं जो कि मोर देन वन लोगों को लेके आएंगे वर्कशॉप में? चलो, हमारी दो बहनें सभी लोग कह रही है कि दे विल ब्रिंग मेनी पीपल, सबको लेके आएंगे, सबको, दो से ज्यादा नहीं, सबको लेके आएंगे। आपके एड्रेस बुक में जितने लोग हैं, आपके बाजू में जितने लोग हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब वो ये आके दावत वर्कशॉप में ना, तो ये उनको दावत कैसे देने का तरीका, दावत का माना, दावत देने का तरीका, दावत क्यों और कैसे, ये हम जानेंगे ये दावत वर्कशॉप में। तो मेरे भाइयों बहनों, सभी को लेके आओ, पूरी दुनिया को लेके आओ। एंड जब वो आएंगे और अच्छी बातें समझ जाएंगे और वो लोगों तक अच्छी बातें लेके जाएंगे, तो आपको कितना फायदा होगा? चलो बताओ, कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। सोचिए, वो समझेंगे वो आगे पहुंचाएंगे, वो समझेंगे वो आगे पहुंचाएंगे, वो समझेंगे वो आगे पहुंचाएंगे। एंड आप कुछ काम किए बगैर आपकी बैंक बैलेंस बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही। तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं अपने आप को कैमरा को ऑफ करूंगा, टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये दावत वर्कशॉप में आइए, दावत देने का तरीका जानिए। एंड दावत वर्कशॉप में लाने के लिए दावत देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक की, बहुत बेहतरीन है। अभी हम अपने कैमरा को ऑफ करते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड विदाउट मच डू अडू वी विल स्टार्ट आज की क्लास इंशाअल्लाह। तो व्हाइल यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, हम अपनी क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो अहेड। एंड जिस काम के लिए हम अभी आज मिले हैं, हम उसको आज पूरा करें। वो ये है कि हम नया शेयर चालू करते हैं, नया शेयर चालू करते हैं, और नया शेयर चालू कर लिए हमने। शेयर स्टार्ट आज की क्लास इंशाल्लाह। बड़ी इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट, हम अपनी क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो अहेड। और जिस काम के लिए हम अभी आज मिले हैं, हम उसको आज पूरा करें। वो ये है कि हम Alhamdulillah, I was just going नया through शेयर चालू करते the हैं, names of the नया शेयर चालू participants, करते and हैं, many of और them नया शेयर चालू are कर लिए हमने। already being with us in some of the previous कैन यू गाइस ideas हियर? self-management. आप लोग को आवाज There आ were रही है? many of बड़ी them who इंशाल्लाह were present in स्क्रीनशॉट, self-management. हम अपनी क्लास को अभी स्टार्ट करते So हैं। it's a big बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, joy for me लेट्स गो to be अहेड। together और जिस again in काम के लिए हम Dynamic, अभी because आज when मिले we हैं, parted हम last उसको time, I आज was पूरा a करें। little, वो I ये was है feeling a little कि sad, हम Alhamdulillah, because when you are नया शेयर together चालू करते for हैं, quite a नया time, शेयर though चालू करते once a हैं, week only for और an नया शेयर hour or चालू कर two, लिए हमने। but when you part, there is कैन यू always a गाइस feeling हियर? of partnership. आवाज आ रही है? बड़ी So I pray for all of you इंशाल्लाह हम अपनी that may क्लास को अभी Allah give स्टार्ट you करते हैं। all those good guidance and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, hidayah. लेट्स So गो when अहेड। Shakil और Bhai and जिस I were काम के लिए हम discussing अभी just आज a मिले हैं, month back हम उसको आज पूरा about करें। some new वो ये courses, है so I कि said the हम heroes of Islam, because as I had just नया delivered शेयर Jummah चालू कर khutbah देंगे, in the same और time, नया शेयर चालू but I found नया शेयर that the चालू कर Jummah khutbah was too strong to कैन accommodate यू गाइस the हियर? Islamic heroes. आवाज आ रही है? बड़ी And Alhamdulillah, Shakil Bhai is usually हम always क्लास ready को with आज स्टार्ट करते हैं। ideas. And he is, mashallah, लेट्स so गो I can अहेड। say और जिस he काम के is लिए हम अभी a month, he is my man Friday. Like, you know how
कोई कह रहा है कि आवाज मर्ज हो रही है, आवाज मर्ज हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. डोंट वरी, इंशाल्लाह विल डू समथिंग. ओके, जस्ट 1 minute. Please be patient with me, inshallah. Everything will be okay. I host or I choose this topic. Why did I choose this topic? Firstly, we are in an age where there are many heroes. Heroes. And in my Jummah khutbah, I was just telling my audience in my Friday khutbah about the heroes, that how many of you are Imran around 30 years of age? So many of them raised their hand. I said, because not from Surah Al Imran, but 30 years before Pakistan had won a cricket tournament. So the captain was Imran Khan. So everybody in Nadiad were giving the name Imran to their sons. Then there were Wasim, after 3 years younger to them. All of them were Wasim Akram, the new hero of cricket. So all of them were Wasim, every second child. You throw a stone and it falls on the head of a Wasim or an Imran. Then they had Salman, then Shah Rukh, these names were never heard in India. Salman, Shah Rukh and all these. And suddenly these came up. So I told the audience that, your names are because Bhaiyo Beno, just give me 1 minute. I will just fix this, inshallah, very soon. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shakil bhai, as usual, always dynamic, mashallah, and energetic, full of energy. Alhamdulillah. And I was just going through the names of the participants, and many of them are already being with us in some of the previous, I think, self-management. There were many of them who were present in self-management. So it's a big joy for me to be together again, because when we parted last time, I was feeling a little sad, because when you are together for quite a time, though once a week only for an hour or two, but when you part, there is always a feeling of partition or parting. So I prayed for all of you that may Allah give you all those good guidance and hidayah,
So when Shakil Bhai and I were discussing just a month back about some new courses, so I said about heroes of Islam, as I had just delivered a Jummah khutbah on the same topic. But I found that the Jummah khutbah was too small to accommodate the Islamic heroes. And Alhamdulillah, Shakil Bhai is usually always ready with ideas, and he is, mashallah, what I can say, he's my man Friday. Like, you know how Robinson Crusoe had. There's somebody who helps you out when you need something to be done. And I told him that I am not good in marketing, but I am good in content building. And that is what I've been doing throughout my life. So Shakil Bhai did all these things. MashaAllah, I saw the posters of Zaid Patel. They were all impressive. MashaAllah, very impressive. May Allah bless Iman Institute for hosting such types of programs. It is really amazing. Giving talk is one thing. Assembling crowd is another thing. And that takes us directly to our topic of today, that these types of program, why did I host or I choose this topic? Why did I choose this topic? Firstly, we are in a heroes, everybody has a hero. And in my Jummah khutbah, I was just telling my audience in my Friday khutbah about the heroes, that how many of you are Imran around 30 years of age? So many of them raised their hand. I said, because not from Surah Al Imran, but 30 years before, Pakistan had won a cricket tournament. So the captain was Imran Khan. So everybody in Nadiadwala were giving the name Imran to their sons. Then there were Wasim. After 3 years younger to them, all of them were Wasim Akram, the new hero. I was feeling a little sad, because when you are together for quite a time, though once a week only for an hour or two, but when you part, there is always a feeling of partition or party. So I prayed for all of you that may Allah give you all those good guidance and hidayah. So when Shakil Bhai and I were discussing just a month back about some new courses, so I said about heroes of Islam, as I had just delivered a Jummah khutbah on the same topic. But I found that the Jummah khutbah was too small to accommodate the Islamic heroes. And Alhamdulillah, Shakil Bhai is usually always ready with ideas, and he is, mashallah, what I can say, he's my man Friday. Like, you know how Robinson Crusoe had. There's somebody who helps you out when you need something to be done. And I told him that I am not good in marketing, but I am good in content building. And that is what I've been doing throughout my life. So Shakil Bhai did all these things. MashaAllah, I saw the posters of Zaid Patel. They were all impressive. MashaAllah, very impressive. May Allah bless Iman Institute for hosting such types of programs. It is really amazing. Giving talk is one thing. Assembling crowd is another thing. And that takes us directly to our topic of today, that these types of program, why did I host or I choose this topic? Why did I choose this topic? Firstly, we are in an age where there are many heroes. Heroes, everybody has a hero. And in my Jummah khutbah, I was just telling my audience in my Friday khutbah about the heroes, that how many of you are Imran around 30 years of age? So many of them raised their hand. I said, because not from Surah Al Imran, but 30 years before, Pakistan had won a cricket tournament. So the captain was Imran Khan. So everybody in Nadiadwala were giving the name Imran to their sons. Then there were Wasim. After 3 years younger to them, all of them were Wasim Akram, the new hero of cricket. So all of them were Wasim, every second child. You throw a stone and it falls on the head of a Wasim or an Imran. Then they had Salman, then Shah Rukh, these names were never heard in India.
Salman, Shah Rukh, and all these. And suddenly these came up. So I told the audience that, your names are because it's not haram, but your names are kept because your parents perhaps had heroes from films, from cricket. So I jumped upon this topic and I started to develop the content that we have to explore our heroes. So let us begin with the sharing of the screen, which would be more easy for us. I could not get the printout today, so after a long time I'm into technology. So you will have to. So this is our topic today, realities of Islamic heroes and why are they qualified to be called Islamic heroes. There are two types of heroes, Muslim hero and Islamic heroes. Every Islamic hero will be a Muslim hero, but every Muslim hero may not be Islamic hero. You understand what I would say? Suppose somebody is a film star. He's a Muslim hero. People love him, have a fan following, but he's not an Islamic hero. So what qualifies somebody to be an Islamic hero? So that's what we are going to explore in this series, and I will tell you today, we will be having introductions of heroes, and from which category I will be going to pick up those heroes for you all. And at the end of the 20th lesson, I am sure you will say 20 was not enough. Let's see. So every society has heroes, fictional heroes like Superman, Batman, and Spider-Man. They never exist. Fictional heroes, they are called fictional heroes. Means they are coming from the minds of the writers. They are coming from the minds of the cartoonists, writers, and film producers and directors. So they make these types of fictional heroes. Now there are two types of fictional heroes. One fictional heroes are those heroes who never exist, like Superman, Batman. You can never find them. The other fictional heroes are people who are exaggerated. They were present, but they were exaggerated as a hero. They were not qualified, perhaps. And they could be a national hero. They could be a sportsman or anybody. They are exaggerated to their position. And if truth is exaggerated, it becomes a lie. If truth is exaggerated, it becomes a lie. वो झूठ हो जाता है. So the second category of heroes in our society are the legendary heroes. Now what are the legendary heroes? Legendary heroes are those heroes who have contributed to the society. But many of them are unknown and known to us because they are mentioned in our textbooks, or their anniversary is celebrated, birth anniversary or so and so day. So these are called legendary heroes. They worked for a time. But they could not stretch, or they could not remain alive in their fame till today. They were for a period, that's all. The third category is the national heroes. And every country has their national heroes, freedom fighters, administrators. So these are the national heroes. Some of them are genuine in building their country. Like you have King Faisal of Saudi, then his father who built the Saudi of today. Then we have the ruler of UAE, president of UAE. And there are many such national heroes in countries. We have our own Pandit Jawaharlal Nehru, Gandhiji. Then the Malaysians have Muhammad Mahathir. Each country, George Washington. Then they have Abraham Lincoln. So these are the national heroes. They have contributed for their country. And they are also known to us only because the history books tells us about them. Otherwise, people would forget them. Or in India, we have holidays. So we know that why is a holiday? Oh, that hero's birthday is there. So these are the national heroes.
Then we have the fourth category, the sports heroes. They also achieve something. The sports hero also achieve. Like Kapil Dev, Sunil Gavaskar, Imran Khan, and Sachin Tendulkar. They are sports heroes. Pele and Zidane and Ronaldo. They are all actually sports heroes. Their performance is limited in the field, ground. And whatever they do over there, people magnify it, they get a lot of publicity in media, and actually they remain hero for a long time, say at least around 30-40 years, till they are replaced by another hero. Like as Sunil Gavaskar was there, then he remained for a time, he retired, and today's generation do not even know him. Then became Tendulkar, he retired, today's generation, they know him little. Then came Dhoni, and then Kohli, and on and on and on. So the sports heroes, they keep on replacing each other. They are for a short time, maximum 10 to 15 years. That's all. Then we have the fifth category of entertaining heroes. Now these are like the Khans of film industry, the Kumars and Khannas, and all these are entertaining heroes. The musicians, Michael Jackson and others. So they are entertainers. Nowadays we have stand-up comedians also. So people like them. And believe me, the entertaining heroes are the one from this entire category to whom people pay a lot of money. The entertaining hero. Sports heroes only when they perform. But entertaining heroes, 500 crore rupees, one movie sells 1,000 crore rupees. And you see, the movies coming up, Bahubali and all that, they are entertaining heroes and they sell. People are crazy like anything. People imitate them. So they are crazy. People are crazy of them, like anything. And entertainment has always been fascinating for the masses. They work like opium. When people are fed up of inflation, price rise, unemployment, communal riots, when a country has so many problems, what do the middle class and the masses do? They go and they see these entertainment films or cricket. And for a timing, these heroes, they work as painkillers. They are like painkillers for a long time. And then they are forgotten. Once they come out of the theater, they forget it. So for 3 hours, they are fresh. And that reminds me of one of the movie called Dabangg, Salman Khan. Dabangg. And the Times of India had written an interview or review about the movie. He said the movie was very boring. But I was sitting in a taxi, a cab, and I asked him, the cab driver, have you seen Dabangg? He said, wow, Saab, excellent film. So I asked him, what was so excellent about it? So he said, Salman Khan's walking style was excellent. So because Salman Khan's walking style was excellent, the man says the film is very good. And is willing to pay 500 rupees to see. And if he takes his family, they spend 2,500 rupees. Taxi drivers. So this is what the entertaining heroes get. Then a new category of rich and famous people as heroes have come up. Bill Gates. Then some people even like Ambani's. And there was a time when Harshad Mehta was also counted as heroes. You know, many people say that he is our hero. So because they are rich, because they are famous, no matter, they are rich because they have taken huge loans from the bank. So they are famous. So this is also another category, and this is a very dangerous category among all these categories. There was a survey I was going through long back for one of my talk. And at that time, these live shows were very new in India. So children used to come on television, and they still come for fashion shows, singing, India has talents and all that. So they took a survey in a school asking the children of 7th grade and 8th grade as to what they like to become in future. And nobody said they want to become cricketer or footballer or a national hero. They said we want to become rich and famous.
So rich and famous is a category now as heroes. I want to be like Bill Gates. So people are selling books, 10 books read by Bill Gates. So people also buy and read it. So this is the craze of heroes. Now I tell you the impact of these heroes. They are influencers. They influence the society. And believe me, they change the tide of the society. Like for example, there was a player, like for example, Indian independence from British. India took independence. So Gandhiji gave non-cooperation movement. And the entire country obeyed him, civil disobedience. People started resigning from government offices. So this changed the tide of the society. Heroes are influential. They influence the minds, the thought process, the hearts, the decision-making power, the taste, the dressing sense, everything. They are influencers, heroes. Fine? So they change the tide of the society. They govern the lifestyle, living, eating, spending, and other habits. Like for example, a beautiful model comes, she's a hero. She comes and says Pepsi, Pepsi, or she says iPhone, iPhone, or this phone, and people buy it because so and so hero has said. So this is called influencing. Our spending habits, our living habits, eating habits, and these habits. Now, the followers of these heroes, they imitate them blindly. There was nowadays we have that haircut. They have a bald. They shave everything from here and only keep this much hair. And when I tried to find out where, so there was a football player. I forgot his name. Some Brazilian or Argentina football player. Something sounding similar to Ronaldo, but there was one player who started it. And boys who never played football, nor interested in football, but this was their favorite football player, so they started cutting their hair like that. So this is called imitating blindly. And some heroes are upgraded to be God, and they are even worshipped. We have a temple of Sachin Tendulkar in Kerala. We have a temple of Khushbu, an actress in South India. So people even upgrade and they take up their heroes as God. So hero worship, Islam also has hero. We don't have hero worship. We don't have hero worship. And that is why when Khalid bin Walid was suspended from his military generalship, it was Umar bin Khattab's decision. There is no hero worship. Nobody gets victory because of a hero. Victory comes only from Allah. That is what he said. So Islam has set up a boundary where it does not allow the heroes to change the tide of the society, or no hero is allowed to change or influence the lifestyle, living, spending habits. No hero is allowed to imitate, and nobody has to be taken up as a god. There is only one hero whom people have to imitate. That is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. But we cannot elevate him to God like many of unfortunate Muslims are doing it. So we have to be very careful about it. Now some heroes have even caused a destruction without morals, without ethics, but greed, lust for power, and fame and ideologies. Like Pharaoh, Hitler, they were also heroes, you know that. Pharaoh had a massive following. His birthday was celebrated. In those days, birthday of Pharaoh was celebrated. And we all know about Hitler. So these heroes have caused immense destruction of the society. They changed the course. They changed the life of people. And they were leaders, but they misguided their people. Now we come to see what about the Islamic heroes. They are real and they are society saviors. Islamic heroes are real heroes. They may not be very handsome or good looking or very rich, and none of this qualification of these sportsmen will fit with Islamic heroes. None of them. We will see what type of heroes Islam has produced. They are real heroes. And
are society's saviors. I didn't say they changed the society. What I said? They saved the society from evil, bid'ah, munkar of hadith, immodesty, so many things, and they change it. They come from all fields. They don't only come from warriors and mujahid and all, no. They come from all fields. They were administrators. They were governors. They were khalifa. They were prophets. There were prophets also as our heroes. They came, they were imam of the masjid. They were muhaddis. They were warriors. They were ordinary soldiers. Ordinary soldiers. Most of you might not even know their names also. Such a contribution. When we come to know them, these are such a huge contribution. So they come from all fields. They lead normal life. They don't live in palaces and big show off, and they go out and knock their door and say, sir, I've come to meet. And they are able to talk to these heroes. People are able to talk and reach these heroes. So these types of heroes, the Islamic heroes we are talking about, they lead normal life. They have families, they have wives and children, they struggle, they work hard, like Dawood alayhi salam was an ironsmith, and the rest of the prophets were all shepherds. They were all living a normal life. They were not abnormal. They were not like 25 feet and all that, no. Except the people of Saleh alayhi salam, they were tall, but not others. They were sincere and humble. Sincere means to do with ikhlas, khulus. It is only in the heart. If it is there in the heart, the mind remains uncorrupt. They were sincere and they were humble. They were sincere and they were humble. These Islamic heroes. You will find all of them sincere and humble. And I will see once we start studying about them. I hope people are noting down, sitting with notebooks. I forgot to remind you all. They did not chase fame and wealth. Paise ke liye nahi. They did not want to become rich and famous, so they wanted to become heroes. No. Because they were sincere and humble. They did not have that arrogance in them like Pharaoh had, and we see the national leaders and head of many states today. They are not humble. They are arrogant. They did not chase fame and wealth. The Muslim or the Islamic heroes, they cleaned the society from evil customs. They cleaned the society, and that was their main job. From shirk, bid'ah, injustice, stinginess, all those ghibah, all that evil that prevailed in their time, they wiped it. And they were of high caliber of character. High caliber of character. We will see, inshallah. I am very, very enthusiastic for the next Saturday to come, so we can discuss all of them. But we cannot discuss all of them in one day. But these are the two most important characteristics of Islamic heroes. Foundation. If you want to become an Islamic hero, don't think of becoming a hero. If you want to do something sincerely for Allah, then there are three things. Their aim had to be Tawheed. Their aim had to be Tawheed. They did to raise the flag and establish Tawheed. From Nuh alayhi salam till all prophets. From Abu Bakr Siddiq to all Sahaba. From Aimma, Imams, Muhaddis, all of these heroes, their target, their aim, their mission was establishing Tawheed. Not establishing Khilafah. Now you understand. It's a very sensitive thing, but I must share with you. Khilafat is not ideal movement of Islam. Tawheed, because Allah says in Quran that if you establish Tawheed, I will give you Khilafat. But some Muslims, they say if we establish Khilafat, then we can establish Tawheed. They are doing it in reverse. Your aim should be Tawheed. Whoever is not on Tawheed, whoever is not promoting Tawheed and trying to be a hero, he will lead himself
and his followers into fitna. Remember this. Tawheed is the foundation of heroic achievement of Islam. What made the Sahaba? What made the Sahaba undergo such a difficult period? It was the spirit of Tawheed. Ahad, Ahad, like Bilal used to say, when he was dragged in the hot sand of Makkah and stones of Makkah, he used to say, Ahad, Ahad. What is that Ahad? Tawheed. Because of that, he had that stamina of patience. Without Tawheed, zero. Even if you are a hero in all the fields, without Tawheed, you are a zero. You can end up being a fitna. That is why a majority of the sects, firqa, among the Muslims, is because they got the Tawheed corrupted. They got their Tawheed corrupted and they misled their own followers. They went to hellfire and they took them off. So the Islamic heroes had always come to raise up the standard and the flag of Tawheed, standard barrier of Tawheed. For example, Muhammad bin Abdul Wahab, 1775, some 250 years before today, 250 years ago. He had written only one book, Zabardast book, Kitab Tawheed, and his momentum started on promoting Tawheed. Until today, his book is considered to be a masterpiece, and he is the hero, Muhammad bin Abdul Wahab. So people call us Wahhabi because we accepted his dawah of Tawheed. So Tawheed, whoever established Tawheed, remained in the hearts of people. These heroes were not temporary heroes. Those heroes are temporary heroes. Like there was a time when Dilip Kumar was a hero from 1950 to 1975 to 1970. 20 years he was superstar. In those days he used to get 10 lakh rupees. In 1960 उस जमाने में उसको एक पिक्चर का 10 लाख रुपया मिलता था. आज का कितना हो गया? 1000 करोड़. इतना पैसा मिलता था उसको. But in 1970 came Rajesh Khanna, 10 silver jubilees, and he became superstar. So people forgot Dilip Kumar. Then came Amitabh Bachchan. So people forgot Rajesh Khanna. Then came Shah Rukh Khan. People forgot Amitabh Bachchan. So this is how the heroes are temporary. But those heroes of Tawheed, it is the duty of Allah to preserve their heroic acts. Were there any books? Were there any printing press in the times of these heroes like Ibn Taymiyyah, Imam Bukhari, and Muhammad bin Wahab? There were no printing press. Did they even know their books will be becoming one of the best sellers? No. They wrote to establish Tawheed and Sunnah. So that is why we still remember Imam Bukhari. We don't know how he looked like, and we don't even care. His book, Sahih Bukhari. This is called achievement. Huh? So number one is Tawheed, center of Islamic heroic act. Number two, they were themselves obedient. Now heroes are obedient. Other heroes, they are arrogant. They want people to obey them. They are like boss. They are not leaders. They are boss. They don't want to lead people. They want to drag people behind them. And there is a big difference. Leading people, I walk and you walk behind me. Dragging people, even if you don't want, we drag you. So these Islamic heroes themselves were obedient to their hero. Like Sahaba, they were obedient to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And that is where they choose their right hero. And the Quran says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً. Indeed, in the messenger is the best example for you to follow. तुम्हारे लिए नबी में एक बेहतरीन मिसाल. He is your hero. The word hero is not there, but it is understood. Allah is talking about this hero. इसको hero लेना, नहीं तो flop हो जाएगी life. Picture तो flop नहीं होगी, life flop हो जाएगी. And also another hero, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, in the Ibrahim
and his people around him like Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub are best example for you to follow, and we have their stories. So Allah is preserving his heroes in his book. The Quran is also a directory of heroes. I say it. The Quran is, for me, it is also. It is a book of law, it is a book of stories, it is also a directory of heroes. Why so and so was the hero? Allah has preserved them. And we will see the Quranic heroes also. There are also common men mentioned in the heroes. I will tell you inshallah. So the people who choose their right, these three qualities. Number one, we have to be on Tawheed, it should remain uncorrupted. Number two, we should be obedient to our hero sallallahu alaihi wasallam by following the sunnah and obeying him. And number three, we choose the right hero. There is no other hero for Muslims except Rasulullah. So this is one of the biggest achievement of the heroes of Islam, that we are focused on three things: Tawheed, Ittaba, and Risala. If these three categories you have it, and you dedicate your life in promoting via these two things, then one day when you die, you go to grave, and the angels will come and give you good tidings about you being honored. People will say, so and so rahmahullah, like Imam Bukhari rahmahullah, may Allah show mercy. Thousands of people are praying for them. Thousands and millions. Why? Because they established toil. So Islamic heroic certificate comes from Allah. And Allah says now in Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. The most honored in the sight of Allah is the one who is a muttaqi, who is afraid of disobeying Allah, who is very conscious for doing anything. He will not make compromise. He will not go to the bank and take a loan. Majburi hai, no majburi. He will not take loans. He will not go and go to theaters. He will not go to see movies. He will not waste his time and money. Because he knows Tawheed. He is obedient and he has chosen his right hero. So when we talk about heroes, these are the two, actually first and second are one and the same. Their aim has to be Tawheed, and second and third are same. They were themselves obedient because they chose their right hero. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the right hero for us. So we take a short break, Shakil bhai, here. I will talk about it. This is क्लास थी हमारी आज की क्लास बिस्मिल्लाह 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 अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांट टू पास पहुंच रही है लोगों तक, हमारी आवाज आ रही है? नाइस, ओके, बिस्मिल्लाह। कोई बताएगा कि आवाज आ रही कि नहीं? Yes, okay, Jazak'Allah'Khair, barakallahu feek, barakallahu feekum. I just want to tell my brothers and sisters कि आज की जो ये क्लास थी, अब तक जो हमने ये किया है, आज जो हमने देखा है अभी की क्लास अब तक के लिए, तो I want to know कि अभी थोड़ी देर में वापस से इसका सेकंड पार्ट शुरू होगा। आपके फीडबैक्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक? अभी तक का जो हुआ हमने सुना, उसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? इंशाल्लाह अपने आप को अनम्यूट करने के लिए रेज योर हैंड प्लीज। बिस्मिल्लाह। आपके क्या कमेंट्स हैं अभी के टॉपिक के हिसाब से? आपको सबसे बेटर, सबसे दिल को छूने वाली कौन सी बात लगी? आप अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल गिव यू द चांस टू अनम्यूट। आप बोल सकते हो माइक पे आके, सो दैट सभी लोगों की इस्लाह होगी। पीपल विल नो, पीपल विल लर्न। एक दूसरे से हम शेयरिंग करेंगे तो काफी लोग जान सकते हैं अच्छे से। तो कोई चाहेगा जो माइक पे आके हाथ करके लोगों को बताना चाहे कि आज अभी तक उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा?
Yes, Sister Rabia, go ahead, unmute yourself. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जो सर ने बताया कि आइडियल्स और हीरोज किसको बनाना है, इस्लामिक हीरोज को, और सबसे बेहतरीन हीरोज में कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात बहुत दिल को छू गई। और बच्चों के लिए भी अगर तरबियत करेंगे तो इस तरह से हम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला आगे भी बच्चों की भी जो है दीन के, उनको भी जो है दीन की तरफ ला सकते हैं, और हर चीज में इस्लामिक तरीके से जो है उनको तरबियत बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। जी जी, जी 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 आई जी लव जी। दैट पॉइंट वेरी मच। या जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकी। ये बहन ने जो बात कही है कि खास तौर पे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की तरबियत में, चलो हम बड़े हम तो समझ गए, लेकिन बोलते ओ वेयर इज योर सुपरमैन, वेयर इज योर फ्रेंड स्पाइडरमैन। कभी कभी हम इस तरीके की बातें करते हैं, कभी कभी हम इस तरीके से उनको बताते हैं कि भाई आपके सुपर हीरोज तो जो है वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लिए सेवियर है। एंड कभी बोलते हैं चलो सुपरमैन आने वाला है, स्पाइडरमैन आने वाला है, क्रिस्टियानियों के जैसा बनना है आपको, आपको मेसी के जैसा बनना है। एंड वी ट्राई टू पोर्ट्रे कि भाई ये हीरोज है। तो वो मेसी को तो पता ही नहीं, मेसी को तो पता ही नहीं, क्रिस्टियानो को तो पता ही नहीं कि कौन एक शकील खान एक कौन से कोने में इंडिया में उसे अपना हीरो समझ रहा है। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की, हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों बहनों कि हमारे लिए वो हीरोज होना चाहिए जो हमें जानते हैं। वी आर मोर क्लोजर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे भाई लोग हो गए ना, वो मेरे से ऐसे करीब हो गए। तो साहबा ने कहा कि अरे हम भी तो आपके भाई है। तो उन्होंने कहा कि यू आर माई कंपेनियंस, और मेरे भाई वो है जो मुझे देखेंगे भी नहीं तो फिर भी मुझ पे ईमान लेके आएंगे। तो ये है हीरो, ये है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों बहनों, ये सिस्टर ने जो बात की, अमेजिंग 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 चीज। एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग एल्स? कोई और करना चाहेगा कुछ? और सिस्टर राबिया का अभी भी हाथ ऊपर है, तो मे बी यू वांट टू से समथिंग, या किसी और को कुछ कहना है? तो वी कैन स्टार्ट द सेकंड पार्ट। कितने लोग चाहते हैं कि वी कैन स्टार्ट द सेकंड पार्ट एंड फीडबैक लास्ट में लें? चलो हाथ उठा के बताइए। Sir, this class will be available on YouTube. Yes, Zoham Chauhan, ये class available on YouTube भी रहेंगी इंशाल्लाह, and you can come back and you can see. नुसरत जमान, आपको unmute किया गया है, please unmute yourself. Yes, go ahead. अपने आप को unmute करें। नुसरत जमान। Maybe by mistake उनका हाथ ऊपर था। मशरिकुल इस्लाम, सुभान अल्लाह, I like this name. मशरिकुल इस्लाम, अपने आप को unmute करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस मेरे भाई। सर मुझे ये क्लास तो अच्छी लगी। इस क्लास का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस्लामिक हीरो, हर एक आदमी एक हीरो बन सकता है। इस्लाम की ये खूबी है कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को सबसे पहले कि इस उम्मत को एक हीरो बनाया है। अल्लाह के रसूल के बाद जो जिम्मेदारी दी गई है इस उम्मत को दी गई है, तो सब अपना सुभान अल्लाह। खुद हीरो हो सकते हैं। दूसरी बात सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, इसको मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हो ताकि बाद में भी देख सके। जी जी, इंशाल्लाह इसे YouTube पे भी अवेलेबल है, और आज ही हम इसे ये जो इनकी जो वीडियोस थी ना, ये इनको हमने अच्छा भाई लेट मी टेल यू एवरीबॉडी, यार जितने भी लोग हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ कि निसार भाई की लाइव क्लास होती है, लाइव। ही इज देयर ऑलवेज लाइव। वो आपसे सामने बैठ के मुखातिब होते हैं और अमेजिंग तरीके से बात करते हैं। आज हमने इसके लिए की क्योंकि बिकॉज राइट नाउ एट दिस मोमेंट वो फ्लाइट में है, वो हैदराबाद से बम्बई जा रहे हैं। तो राइट नाउ दिस मोमेंट, अल्लाह अल्लाह उनको जज़ाक खैर दे, अल्लाह उनको
हिफाजत से लैंड कराए एंड उनको फिर उनके घर तक पहुंचाए। हमारी दुआ है उनके साथ में। तो ही इज इसके लिए हमने आज ऐसा किया कि उनकी लाइव क्लास की जो लेसन नंबर 1 थी उसको प्ले किया, और प्ले करके हम जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे भाई बहन जो जिन्होंने ये क्लास अटेंड ही नहीं की थी, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है, राइट। तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में निसार में लाइव रहेंगे। लेसन नंबर 18 रहेगा क्योंकि उनकी 17 लेसन फिनिश हो चुके हैं। जैसा कि ये लेसन नंबर 1 था, वो लेसन नंबर 18 तो रहेगा। लेकिन जब 20 हो जाएगा उसके बाद में इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 2 से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारे भाई बहन जितने भी लोग हैं वो आके कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, क्लास देख भी सकते हैं। तो जस्ट आई वांट टू टेल ऑल दिस टू यू और एवरीवन इंशाल्लाह। तो और कुछ कहना चाहेगा कि लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, लेट्स गो अहेड। हम शेयर करते हैं स्क्रीन सेकंड पार्ट के लिए। या फौजिया खुद, यू वांट टू से समथिंग? एज यूजुअल आपके बहुत अमेजिंग फीडबैक्स होते हैं। फौजिया खुद, गो अहेड सिस्टर। जो सभी को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, जैसे कि सर ने शुरू में बताया कि नहीं, अभी भाई ने बताया कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तो कोई नबी नहीं आने वाले, तो हमको उनकी जितनी भी बातें हैं, जो भी उनके ये है, वो आगे टीचिंग्स है, वो आगे हमको फॉलो मतलब लेके चलना है और आगे दूसरों तक पहुंचाने, जैसे नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने, से आपने बताए थे। और फिर हाँ सर ने बताया कि मतलब वक्ती तौर पे जो क्या बोलते हैं हीरोज होते हैं, जैसे मिनी स्टार्स बोलो और फिल्म स्टार्स बोलो, तो जिनका ट्रेंड चलता है हम उनके उनके नाम हमारे बच्चों के रखते हैं ना। शाहरुख जैसे बताया सर ने। अब मेरे को भी हाँ सलमान खान पसंद है, हाँ लेकिन उतने टाइम के लिए, खाली जरा से के लिए, उसके ऊपर हावी जी नहीं होने देने का कोई चीज को अपने पे ऐसा। लेकिन जी अपने को असल में जो हीरो है हमारे, जैसे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में अपने को अपने बच्चों में डालना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए सब बातें उनके। लेकिन तो फिर क्यों वो लोग यहूदियों की स्टाइल अपनाएंगे, क्यों जाएंगे फिर वो लोग? लेकिन हमने वो गैर जिम्मेदारी लापरवाही की है ना बच्चों के केस में ऐसा। तो हमारी कौम फिर कहाँ जा रही है, ऐसा हो रहा है। जी। बस आज के एक लिए इतना बहन, ही। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह फीक। एक बहन ने पूछा है कि निसार सर की लाइव क्लास क्या होगी? नेक्स्ट सैटरडे को लाइव क्लास होगी उनकी, ठीक है। तो उनकी लाइव क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी। आज उनकी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निसार सर की तो लाइव क्लासेस तो चलती रहती है। हमने आज देखा कि इस्लामिक हीरोज और मुस्लिम हीरोज में क्या डिफरेंसेस। हमने ये भी देखा कि इस्लामिक जो हीरोज थे ना, उन्होंने सोसाइटी नहीं चेंज की है, उन्होंने सोसाइटी चेंज नहीं की है। जैसा कि निसार भाई ने बताया, उन्होंने इम्प्रूव किए। कैसे इम्प्रूव किए? उनकी सिंसियरिटी से, तौहीद से। तौहीद जो नंबर 1 क्राइटेरिया है, जो कि मस्ट है, मस्ट नंबर 1 क्राइटेरिया। जो उनकी जो ताकत थी, ब्रेवरी थी, वो कहाँ से आई थी? वो हीरो कैसे बने थे? उनकी तौहीद से बने थे। तो उनका जो ओबीडियंस था, वो पिक एंड चूज वाला ओबीडियंस नहीं था, है ना। उनका ये था कि इन टोटालिटी में ले लेना, इनकी सिंसियरिटी। और उनके हीरोज कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी तरीके से हम दुआ करते हैं कि हमारे जो अल्टीमेट यूज है, द बेस्ट ऑफ द रोल मॉडल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हमें उनके 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 बताए हुए इताअत, उनकी इताअत और इत्तबा करने की अल्लाह ताला हमें सभी को तौफीक दे। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट इंशाल्लाह। हम सेकंड पार्ट को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। ये हमने स्टार्ट कर दिया है, बिस्मिल्लाह। Hero of Iman Institute. Subhanallah. Can I take a short break? Can I get some glass of water? Yes, give me how many minutes? 5 to 7, around 5 to 7 minutes. Perfect for me. Perfect for me, inshallah. Jazak'Allah'Khair, barakallahu So feek. this is और कितने लोग को हमने खींच के लेके आए? Now, okay, and it is so powerful. Actually, we should be go and watch this movie. This is a very good place. यहाँ पे सेल लगा हुआ है भाई. Let's. Jazak'Allah'Khair and Shakil bhai, you are a motivator, but not a junk motivator. I have a suggestion for you all. There is nothing like mouth publicity. Like when you tell me, right, how do you get more people in such programs? How?
by writing a short review of 3-4 sentences, putting the link or the poster of the program and put it in your WhatsApp groups. That's all. Write 2, 3, 4 lines of review. That's all. The way we used to write essays and letters in school, right? Now it's time to use them for our religion, inshallah. So we begin further. We were at the previous screen. There we are once again. People are saying characteristics we saw, and now we will see the next. Nisaar, students are saying that your voice is very loud. Just if you can adjust a little bit. Just a and then, yeah, inshallah. Jazak'Allah'Khair. Barakallah. Because I am using it directly from laptop. Now is it okay? Same. Hello? Actually, it is still the same. Achha, let me. You have to go to the Zoom setting, audio setting, and just make the mic little. Actually, if you, it will. Go right. Mobile ka thoda. You know, I'm very particular about setting and lights and all. Eco हो रहा था अभी तो हम लोग कहाँ थे, कौन सी साइट पे थे? Okay, so we go to the next. These heroes, Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. These heroes had extraordinary qualities. The Muslim heroes, they were brave, all of them. Why? In order to become an Islamic hero, you have to speak truth, and to speak truth, you have to be brave. Like the Quran says, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Tell the disbelievers, we will not worship what you worship. So we have to go and tell them. It requires courage. Allah does not say, Ikra, ayyuhal kafirun, just recite. No, Allah says, Qul, tell them. Say, we have to tell them. But we only recite. So we are not brave. The Sahaba went and told, so we became Muslims. Our forefathers became Muslim because those people told, they were brave. We are even afraid to kill a lizard or a cockroach, many of us. We are not brave. We cannot even speak truth. That is why there is so much of evil in our customs. Look at our marriages. Look at the budget of a common middle class family's marriage. The amount spent in a Muslim marriage is more than the amount spent on the education of the child, total education of the child. Education में कितना खर्च करते हैं हम? 2000-1500 रुपए की फीस होती है, एक साल का 30,000 रुपए की फीस, 10 साल की 3 लाख रुपए की फीस, 15 साल की 4.5 लाख रुपए की फीस, और किताबें पकड़ लो 1.5-2 लाख रुपए की, और ट्यूशन पकड़ लो 2-4 लाख रुपए की, और 6-7 लाख रुपया एजुकेशन में खर्च होता है. लेकिन शादी में 10-15 लाख रुपया खर्च होता है. We spend 10 to 15 lakh of rupees in our weddings because somebody in our circle among the elders was not brave to tell that this is wrong, नहीं करना चाहिए. क्या करें, मजबूरी है, society. So bravery is essential to become a hero. Imam Bukhari was brave, so he sorted out all the false hadiths and exposed all the fabricators of hadith. That was bravery. Ibrahim alayhi salam had a debate with Namrud in his court. He was brave. We are afraid to tell our own cousins that this is haram. See, they went to the court of Firaun, they went to the court of Namrud, they went to Abu Jahl, and they spoke. They were brave. If we don't have these qualities, we cannot become brave. So Allah gives us, assignments in the Quran. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Tell the people of the book. We don't go and tell them, but we say Happy Christmas. Maazallah. Right? Absolutely. So the bravery is diminishing from the community. That is why people are not afraid. Though we are 55 Muslim countries and 140 crore of Muslim, people are not afraid of us because we are not brave. And bravery is here. As they say in Urdu,
छुरी चलाने के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए. I'm not talking about using a छुरी, but I'm talking about जबान चलाने के लिए, हाँ, जबान चलाने के लिए कलेजा चाहिए बोलने के लिए. So you're not brave. They were brave. Honesty. They were honest, very honest. आज ख्यानत कितनी होती है? इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, हलाल इन्वेस्टमेंट, इधर पैसा डालो उधर पैसा डालो. People go away with the money. There is no honesty. Obedience, very important. And I tell you, when the importance of obedience comes from this Quranic ayat, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Look at the impact of obedience. When Ibrahim alayhi salam obeyed Allah perfectly, atammahunna, perfectly, 8 plus 10 out of 10. Allah says, I will make you a leader, I will make you a hero of Muslims. So we go for Hajj, everything, Ibrahim alayhi salam, Jamrat, Ibrahim alayhi salam, everything is about Ibrahim, Maqam Ibrahim. You put the Musalla over there. Who built the Kaaba? Ibrahim alayhi salam. See? So this is the reward Allah gave him because of his obedience. We are not obedience. We are obedience in pick and choose. Something that is easy for us, very delicious to obey. So we are obedience in what they say, pick and choose. Buy 3, take 1 free, like that. Huh? Buy 3, take 1 free. So we obey in those things where we can get more benefits. And that is why sincerity is not there. They had sincerity. They had sincerity. Imandari thi unme. They were sincere. They wanted to do for Allah. Today we have so many brandings of da'is. So many da'is and scholars are branding themselves. They have their website and they have pictures and this and that. You can see there are 7 people. I saw a picture. There were 7 brothers giving 1 copy of Quran to a non-Muslim and 7 of them posing picture with him. There is 1 copy of Quran given to 1 Muslim, 1 non-Muslim, and 7 brothers are posting, clicking the picture all together, and everybody is sharing it on their Facebook. So these types of things, they attack our sincerity. Islam requires sincere people. Islam does not require people who want to do dawah and Islam for the sake of becoming famous speakers and scholars. No. Allah does not need us. We have to do it qala maziratan ila rabbikum, so that Allah may not catch us on the day of judgment. Tumne kya kiya? Tumhare family mein biddat hoti thi. There was biddat in your family. What did you do? So we require bravery, honesty, obedience, and sincerity. When you are sincere, you become brave. Kisse darne ka hai yaar, sach to bola. So you are brave. Sincerity brings up all these qualities. Do you know that? You want to become brave? Be sincere. Such bolo Allah ke liye, and Allah will make you strong. Then another quality they had was patience, sabr, guna pe sabr. When they got a chance to commit sin, Yusuf alayhi salam said no, sabr. Nuh alayhi salam, 950 years of sabr. Till Allah's help came after 950 years. Look at their stamina. Look at their stamina. 950 years of sabr. And look at the moment, as long as the Quran says, as long as the people of Bani Israel did sabr, Allah promised them the help and to get rid of Pharaoh. And Allah got rid of the Pharaoh. He was drowned without any battle, without any bloodshed. Allah destroyed his army. But the moment Bani Israel lost sabr, Ya Musa, lan nasbiru, hargiz nahi, lan, absolutely lan nasbiru ala ta'amun wahid. We will not have sabr over one food. Ye kya jab dekho tab manu salwa, kanda, lasun, we want to eat that. So they lost the patience and they lost the power. Otherwise they had so much of help of Allah, clouds on their head. They were actually the heroes of the time. The moment they lost patience, patience over luxury. Imagine patience over luxury. They lost patience over luxury. We also lose it, huh?
In winter, we don't go to the masjid to pray. Why? Because it's very cold. So patience, and it is because of patience a person remains sincere. If you want to be and remain sincere, you must be patient. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru warrabitu fattaqullah la'allakum tuflihun. You want to be successful like hero. Ya ayyuhallazina amanu isbiru, sabar karo. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru, sabar karte raho. Warrabitu, be firm in your sabar. Fattaqullah, and have taqwa of Allah. This is called patience. Karte raho, there is no full stop. Karte raho. The Sahaba continued with the patience till Makkah was captured. Then there were other enemies. Then there were munafiqs. So again they required patience. Then the death of the Prophet, death of Abu Bakr, then death of Umar. See the Sahaba, those who were alive. What did they undergo? Look at the rebellion during the time of Usman and Ali. The Sahaba were patient. Patience. They had patience. Then they were devout. Devout, worship regular, punctually. ऐसे नहीं कि जुम्मा जुम्मा रमजान रमजान ऐसे नहीं. Devout, worship Allah devoutly. Qaaniteen. If you cannot worship Allah devoutly, so you are a seasonal Muslim. Ramzan Muslim, Jumma Muslim, like that. Part-time Muslim. And in fact, there is no part-time Muslim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Enter into Islam wholeheartedly. Don't come part-time. This is not a job. It is a duty. You cannot be a part-time Muslim. You cannot be a Muslim only in Ramadan. Udkhulu fis silmi kaffa. Complete Muslim. Silmi, Islam. Not part-time. So they were devout. We will see their stories in the coming episode. I feel like pouring out everything today itself. But then we need a break. I have to prepare more interesting stories. Then they were modest. Very modest. They were shy. They were modest. They could not refuse a beggar. If they didn't have money, they borrowed and gave them. They were modest. They had haya. They were truthful. As I said, bravery and truthful. They come together. So these were the extraordinary qualities of Muslim heroes, Islamic heroes, which none of these qualities is found in the 6 or 7 categories I showed you. Do you know that? He's a national hero. For what? For Allah's sake? No. For the sake of his country, nationalism. Khalas. No sincerity. He's brave. He's brave. Where? In cricket, in films, he can beat 25 people. But in real life, he is bowing to political parties. Say? Of course. He is honest? No. They don't pay taxes. They are obedient? No, they are not obedient to their own father. Their children are not obedient to them. They don't have patience. They drink. They get drunk. And they misbehave in the society. You can see through newspapers. They never worship Allah. Rarely. Not even kinare. They are not modest. As most of these heroes have spread immodesty. The film stars, the sportsmen are more well known for their girlfriends rather than their sports. Number of girlfriends Ronaldo has, number of girlfriends so and so cricketer has. They are always having pictures with girls. Though no modesty, they are promoting immodesty. They are not truthful. The movies that we see, they are lies. They are lies. Means they are imagined, like for example, an actress calling a Nameram as a husband, darling, in front of the people. Millions of people see it. And in a reality, he is not her husband. He's speaking a lie. And he pay 500 rupees to see that lie. So, but naturally, we have lost all these qualities from us because we have replaced our heroes. Our heroes are they now. We put our child's name as Imran because of cricketer, not because of Surya Ali Imran. How many of you have Abu Bakr in your circle? In your families, nobody is Abu Bakr.
कोई नया नाम बताओ, फोन आता है, निसार भाई बच्चा पैदा हुआ, कोई नया नाम बताओ, नया नाम कहां से, क्या वही नाजिल होगी? Am I going to get some revelation? नया नाम बताओ. How many of you have heard a name like Ali, Muawiyah? There was a Maulana who was telling the Nisaar bhai, show me one Muslim whose name is Yazid. Yazid, it's an Islamic name. Oh, Muharram, oh, Shia. So they don't, we have lost our bravery. We have lost our bravery. Yazid नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है कि नहीं? So this is what exactly is happening to us. Huh? Because these qualities, we have picked up people who are not brave, who are dishonest, who are disobeyed, who are not sincere, who are not patient, who are not devout, who are immodest, and who are false. So because of these types of heroes that have come in our lives, the real heroes are forgotten and ignored. And the noble habits each one of them had, these are the few habits, I mentioned it for you all. They recited the book of Allah, each one of them, not few of them. Each one of them recited the book of Allah. Hare. And how much? Not Khatme Quran, like we have Khatme Quran. I say there is nothing like Khatme Quran, that is Tilawati Quran. What is Khatme Quran? Khatme Quran, Jalebi and Ankatai. There is Khatme Quran term in the Quran. It is Tilawati Quran. Tilawati Quran. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Those who are given the book, they do tilawat, not Khatme Quran. Target Khatme Quran nahi, 10 Quran khatam kiya, 5 khatam kiya. No. Target should be Tilawati Quran. The Sahaba recited, we will see in the coming days, their jazwa of recitation. They woke up at tahajjud. Wal mustaghfirina bil asahar, and they did astaghfar at asahar, suhoor, 4 o'clock, 3 o'clock, when we go to sleep. After having a nice time on Facebook and WhatsApp, we go to sleep at 4 o'clock. And then we miss the Fajr prayers. But the Sahaba, they used to sleep early and they used to get up at Tahajjud and they did astaghfar. They were humble, they were sincere, they did not got involved in those sins, major sins, yet they did astaghfar. So these are the habits. They forgive and pardon people. These are the heroes. They used to forgive the people. Maaf kar diya. And there are examples in the Quran. Yusuf alayhi salam forgave his brothers and he said, Shaitan ne kiya tha. If you see the verse, Ayat Surah Yusuf, Anta Yusuf, we will have a discussion in one of those. Forgive and pardon people. Very difficult, na? We cannot even forgive our own brother and sisters and uncles and aunties. Forget about people far off and enemies. Never delayed khair. Ulaika yusari'una fil khairat. When they wanted to do charity, they did not depend upon, they did not wait for the salary. They did not wait for tomorrow. They never delayed. They never delayed. Kal kare to aaj kare to ab kare. That was their something which made them heroes. Habits makes your character. A person is in a habit of speaking lies, so he is a liar. Makes your character. So these are the habits. Now we come to the main topic. What do you expect to learn from this course? What are your main takeaway from this course? What do you expect? Tomorrow on Saturday onwards, you will be giving me how much time? 1 hour multiplied by 70 of you. 70 hours. So what do you expect me to give you? What will you take from this 1 hour multiplied by 20, each one of you giving 20 hours? What will you take away? Can I have some words from you all? Let me see. Type it, please. Let me see. Do you want them to unmute? Yeah. Yes, because let me see what hand. they expect. Then I will show you what they should expect in the next slide.
Yes, yes, brothers and sisters, why don't you please raise your hand? What do you expect and what you want to do with this course? Raise your hand. We will give you a chance to unmute. Yes, brother Mansoor, go ahead. मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे हम अनम्यूट सॉरी म्यूट करते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि जो अभी सर ने पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम दिस, एंड देन ही विल टेल यू कि ये कोर्स में क्या क्या है. सो सिस्टर उमामा तहसीन को अनम्यूट किया गया, प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सर अल्हम्दुलिल्लाह, टेक अवे फ्रॉम दिस कोर्स में तो सबसे पहले तौहीद की बात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बार बार पढ़े हम और अपने घर में बच्चों को पढ़ाएं ताकि उससे वो भी सीखे कि किसको हीरो बनाना है. और सर ने जो क्वालिटीज बताए, जैसे सहाबा के बारे में किताबें पढ़ाएं और वो क्वालिटीज बच्चों में डालने के लिए खुद हम भी अमल करें. और क्वालिटीज में सबसे ज्यादा फर्स्ट सिंसियरिटी आएगी तो सब चीजें आएंगे. जैसे जी 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 जी, बेहतरीन बेहतरीन. ये बोलने में बहुत इजी लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नीयत तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल करने बहुत मुश्किल होता है सर. जैसे बच्चों से अल्लाह आसान करे. चैलेंज पेरेंटिंग का तो बहुत बड़ा चैलेंज फील हो रहा है आजकल. जी जी, अल्लाह आसान करे, अल्लाह आसान करे सभी के लिए. जज़ाकल्लाह खैर, बरकल्लाह फीकी. एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू अनम्यूट? कोई चाहेगा अनम्यूट करके कि व्हाट इज द टेक अवे, व्हाट योर मेन टेक अवे फ्रॉम दिस कोर्स? एनीबॉडी एल्स? रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट करने का मौका देते हैं. तूबा अब्दुल्ला, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज गो अहेड. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सर मैंने आपको मैसेज भी की थी कि आप प्लीज उर्दू में ये लेक्चर दीजिए क्योंकि इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है, लेकिन आपने मेरी मैसेज का कुछ जवाब नहीं दिया. आई एम सो सॉरी सिस्टर, आई एम रियली सॉरी. मैंने आपका मैसेज नहीं देखा. लेकिन जो निसार सर का जो अंदाज जो है ना, वो इंग्लिश उर्दू दोनों भी है. लेकिन ये तो पहला वाला था, लेकिन सेकंड वाले थर्ड वाले इसमें जो अभी तो वो 18th वाला लेक्चर उनका आएगा नेक्स्ट सैटरडे को, एंड इंशाल्लाह उसमें वो पूरा उर्दू हिंदी में ही रहेंगे ज्यादातर. तो ये तो स्टार्ट जब किए थे तब बाद में हमको पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी उर्दू में चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी स्टाइल चेंज किए थे. लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ तो गई होगे, राइट? है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. इन्होंने जो हीरोज के असल में क्या होता है, हमारे कश्मीर में इस वक्त थोड़ा काम ज्यादा होता है. बच्चे स्कूल से आते हैं, वो हमारे शौहर आते हैं, इस वजह से काम भी हम करते थे और ये उर्दू में ये समझने में आसानी होती थी. लेकिन जब इंग्लिश में इसमें फिर इंसान को साइड में रहकर अच्छी तरह से समझना पड़ता है क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं है हमें इंग्लिश के बारे में. इसी वजह से हमने मैसेज आपको की थी. अल्लाह आसान लेकिन करे, अभी अल्लाह आसान करे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानी की इस बारे में. क्या शेख साहब ने बताया कि जैसे हम देखें कि हमारे हीरोज, असली हीरोज कौन है. हम नाम रखने में भी जैसे कहते हैं, हर कोई कहता है कि नहीं नया कोई नाम बताइए, नया कोई नाम बताइए. अगर हम देखें फिर एक आलिम ने उनको बताया था कि फिर आप अबू जहल नाम रखिए, कयामत तक कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं होगा. हम समझते हैं, हम नाम में भी हम समझते हैं कि अगर अबू बकर सिद्दीक जैसा हम नाम रखें, उमर जैसा नाम रखें या अब्दुल्ला जैसा नाम रखें कि अल्लाह का प्यारा बंदा है और अल्लाह को बहुत पसंद है ये नाम, तो इससे हमें इस जो आप इसने दर्स आज दिया, इसे हमें यही लगा कि हमें पहले फॉलो करना चाहिए, पहले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद उनके सहाबा को, फिर जो भी उस मनहज पर चलते हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह. उसी वजह से हमें हमारे घरों में चाहे हमारे बच्चे हों, पहले वो इंशाल्लाह हिदायत की तरफ आएंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम बाकी लोगों को भी हिदायत की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ला सकते हैं. सिर्फ एक मिनट बहन, एक मिनट. हेलो, yes, yeah, this is, but I'm in a class. Can I call you back in another 15 to 20 minutes or maybe half an hour, inshallah? Okay, I'll call you on the same number, inshallah. Assalamu alaikum. Yeah, sorry, yes, go ahead, sister.
जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सीखा यहाँ तो अब हमारे ग्रुप में जितने भी ये लोग थे वो तो इस दावत आपके दावत सेंटर से बहुत लोग जुड़ गए हैं। जो मैंने आपसे वो बोला था कि हम जो तजवीद क्लास फजर के बाद पढ़ते हैं उनमें जो ग्रुप में मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं उन्होंने आपकी क्लास ज्वाइन की है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि उनको काम भी होता है लेकिन वो आपका दर्स भी इस टाइम खासकर इस टाइम का दर्स इससे हमें इखलाक के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह उस सिस्टर्स ने उस दिन बोला था कि मुझे बहुत शरारत चढ़ती है, मैं बहुत तेज होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि आपने समझाया या इन्होंने शेख साहब ने समझाया हमारे इखलाक में बहुत, क्योंकि इंसान जब दावत देता है तो पहले उनकी अपनी इखलाक अच्छे होने चाहिए, अपना किरदार अच्छा होना चाहिए। हम में थे वो, हमने पढ़ा था लेकिन हमारी जिंदगी में वो नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें आप सब लोगों से मिलाया, चाहे वो जैद साहब हो, शेख जैद साहब हो, आप हो या ये हो, अल्लाह का फजल है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसका बेनिफिट भी देखते हैं कि मैं अब दर्स देती हूँ सुबह फजर के टाइम भी, दर्स कुरान और दर्स हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन भी मैं दर्स देती हूँ 7:30 से 8:30, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे आपसे मिला, ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इल्म की वजह से जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकी। बहुत ही अमेजिंग फीडबैक रहा आपका। एंड मैं बस एक और चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा वो हमारी बहन कहाँ है जो लास्ट टाइम कह रहे थे कि फिसल जाती हूँ, तो शायद अल्लाह करे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो उन्होंने अपने फिसलने के ऊपर काबू किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सभी को अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे। तो मैं जस्ट चाहूंगा कि अभी हम देखते हैं कि निसार सर की तरफ से क्या हमारे लिए इस कोर्स के बारे में है। You fight with your siblings? Do not pray? You fight with your friends? You give back replies to parents and teachers? No. My family, Just kidding. My family do lots of bidat, and I want to like a. Now let me see. मेरी दुकान में क्या क्या माल रखा है आपके लिए? What am I going to give you? Inshallah, Sister Nilofer has something to say, and Hamza also. Quickly, a few words from Sister Nilofer and Brother Hamza, and then Nilofer. How are you, sir? Brave and. Yes, ma'am. Anybody else? Hamza? Assalamu alaikum. Power myself. हम आगे लेके जा रहे हैं कि जल्दी से जज़ाकल्लाह से के भी इस्लामिक हीरो। देखो आप लोग ने तवज्जो से सुना नहीं। स्ट्रेंथन तौहीद, ईमान मजबूत होगा तो सब सीख जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, एडियर टू सुन्ना, जज्बा आना चाहिए। ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। हम और शकील भाई और जैद पटेल जब हम दीन सीखने निकले तभी ये यूट्यूब कुछ नहीं था। एक ऑडियो कैसेट आती थी, वी यूज्ड टू लिसन टू दैट ऑडियो कैसेट एंड लर्न। बट सी द फैसिलिटी टुडे। So adhere to sunnah, number 2. Number 3, be on the manhaj of salaf, not on the manhaj of Kharjiites, rationalites and Shiites and entertainers. No, be on the manhaj of salaf. There are so many manhaj floated by the deviated people in the Muslim market, and they are deviating people in wholesale. There are munkar hadith like Javed Ahmad Kamdi, and there are munkar hadith like some engineer, Asghar Ali engineer of Pakistan. So many people have been coming up. They are corrupting the manhaj. Discover real heroic characteristic. ये जरूरी है। हम लोग कैरेक्टर भाई वो क्यों हीरो बना, पर्टिकुलर आदमी क्यों हीरो बना? वो तो स्कॉलर नहीं था, फिर वो हीरो कैसे बना? नॉट ऑल ऑफ देम वर स्कॉलर्स, फिर हीरो कैसे बना? तो वी हैव टू सी दैट आल्सो कि भैया हम लोग ये सीखेंगे कि हीरो बनने का तरीका, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ टू हैंडल क्राइसिस। हाँ, जबरदस्त। थोड़ा सेल्फ मैनेजमेंट में वी हैव टच्ड इट। वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल क्राइसिस। असल में सब्र सबसे पहले उड़ जाता है क्राइसिस में। पेशेंस इज एट द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ कैलामिटीज। तकलीफ में पेशेंस सबसे पहला होना चाहिए। लर्न लेसन्स इन लीडरशिप।
so that your children and your followers will follow you. आप कब्र में आराम करते होगे, आपको सवाब जारिया मिलता होगा. So we are going to learn how to strengthen Tawheed, how to adhere to the Sunnah, how to be on the manhaj of Salaf, how to discover the heroic characteristics, how to handle crisis, and how to learn lessons in leadership. ये सारे topic sensitive है, and I'm going to speak up very openly. कयामत के दिन you may not catch me कि अल्लाह निसार सर के क्लास में 20 घंटे तक बैठे, लेकिन कभी भी हमको बताया नहीं इन्होंने ये सब गलत है. So be ready, inshallah, and we will discuss a lot of things, inshallah. The good news is that real heroism is not displayed only in heroic personality. एक आदमी हीरो दिख, जरूरी नहीं कि हीरो दिखे, बॉडी बिल्डर जरूरी नहीं, दुबला पतला आदमी भी बहादुर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes. Even a thin person can also be brave. And masculine will be afraid of cockroaches and lizards. Second good news, you don't have to be rich or handsome to be an Islamic hero. Everybody can become. Rich or handsome होना जरूरी नहीं है. Dynamic, क्या handsome speaker है? अरे भैया handsome speaker है तो शादी कर लो. Talk सुनने के लिए तो जाओ मस्जिद में. So we will not have that glamour factor in dawah. Never have that. If you take only one advice from me from today, you remember only one thing. Remember this. Don't try to be rich and handsome to be an Islamic. बस बाकी सब तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा इंशाल्लाह. Now see the real heroes and their zeal, jazba. This is what we are going to study about. Zeal का मतलब होता है जबरदस्त जज्बा. The youthful heroes. और हमारा तरीका क्या रहेगा? I won't be telling you the biographies. I will be picking up a story or a topic and web stories around them, and we'll learn lessons from those stories. हाँ, ये नहीं बायोग्राफी नहीं करेंगे, स्टोरी उठाएंगे, सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड वी डिस्कस. यूथफुल हीरोज, मुसअब बिन उमैर, अली, फातिमा, like that. Children as heroes. Children, yes. Women as heroes. I didn't say heroine. Otherwise, that's like makeup and all. So I said heroes. Performers. Dynamic academicians. Unmatched valor, bravery, courage. Amazing obedience. Amazing obedience. And our heroes will be the prophets, the Sahaba, the Tabi'in, the Imams, the Muhaddis, the ulama. Yes, the ulama. We don't know, they are scholars, they are heroes. इनकी वजह से सोसाइटी में हमारे मोहल्ले में बिद्दत नहीं होती है. हीरो है बेचारा, लेकिन nobody knows him because he does not have a website, he is not on YouTube, he does not have an Instagram account, but they are the real heroes. So we will be picking up these heroes, listening to their stories, taking lessons from them, and absorbing those lessons and asking Allah to grant us the characteristics like that. Any questions or suggestions? Welcome. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम. मेरे भाइयों बहनों, I want to tell you something which is very amazing. मैं जितना ये देख रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. Why? कोई बताएगा कि क्यों? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है राइट नाउ. कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है कि क्यों रोंगटे खड़े हो रहे थे हमारे. ये बताएगा? चलो हम बताते हैं आपको. ओके, ये जो हमारी क्लास हुई थी ना, ये हुई थी क्लास जून 18 को. जून 18 को ही हमारी क्लास हुई थी. और हमने ये क्लास, जज़ाकल्लाह खैर, हमने ये क्लास के बाद में इसके बाद में जितना भी कुछ कहा ना, वो सब क्लास होती गई. हमने कौन से टॉपिक कवर किए गए वो हम आपको बताते हैं. एंड यकीन करें, उन्होंने जो कहा उससे भी कई ज्यादा उन्होंने डिलीवर किया. उन्होंने जो कहा उससे भी कई ज्यादा उन्होंने डिलीवर किया. ओके,
कई ज्यादा उससे भी कई ज्यादा उन्होंने डिलीवर किया। वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या डिलीवर किया। एंड बहुत ही अमेजिंग सीरीज है उनकी। उनकी क्लासेस में हम दिखाते हैं आपको कि क्या उन्होंने डिलीवर किया, वो यहाँ पे है। आई एम सो सॉरी, यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। बस थोड़ा सा सवाल, उन्होंने क्या डिलीवर किया अभी हम बता रहे हैं आपको। ओके, तो जो पहली की जो क्लास थी, पहली क्लास थी, वो ये थी जो अभी हमने देखा, राइट है ना। और ये इसके बाद में सेकंड क्लास थी कि चैंपियंस ऑफ तौहीद। अमेजिंग, जो जो चीज़ों ने कहा कि हम बताएंगे आगे की क्लास में आएगी, तो ये सेकंड क्लास में आई। फिर उसके बाद में आया सुपर परफॉर्मेंस। ये कौन परफॉर्मेंस है? ये हम क्या करेंगे कि जब भी निसार भाई नहीं होंगे या फिर जब ये कोर्स फिनिश हो जाएगा, तो हम ये इसका एक करके रिलीज करते जाएंगे आप लोगों को बुला के। फिर उसके बाद में सुपरलेटिव करेज। हाँ, तो इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे, हीरोज थे, उनका करेज क्या था, उनकी हिम्मत क्या थी। पेन वॉरियर्स जैसा उन्होंने बताया, एकेडमिशियंस, तो वो किस तरीके से उन्होंने इस्लाम के लिए उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जिहाद किया कलम से। तो ये बताएंगे इसके अंदर। उसका सेकंड पार्ट भी हुआ, ये डिफेंडर्स ऑफ ट्रूथ, इसका सेकंड पार्ट हुआ। पेन वॉरियर्स का सेकंड पार्ट हुआ ये डिफेंडर्स ऑफ ट्रूथ। फिर उसके बाद में आया, उन्होंने कुछ पर्सनालिटीज का नाम लिया, तो अमीर मुआविया का नाम आया। तो उनका लीडरशिप, उनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, वो कैसे स्कॉलर्स थे, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या थी, ये हमने देखा उसके बाद की क्लास में। फिर उसके बाद में अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में आया। उसके बाद में साबिरून कौन है, सब्र रखने वाले कौन है, तो उसके बारे में आया। फिर बाद में वंडर्स ऑफ हीरोइक वेमेन, जो उन्होंने कहा कि मैं हीरोइक वुमेन के बारे में बताऊंगा, तो ये हीरोइक वुमेन का फर्स्ट पार्ट आया। उसके बाद में विमेन ऑफ करेज का आया, अमेजिंग था। फिर उसके में लीडरशिप थ्रू ओबीडियंस, ये आया उनका। फिर उनके बाद में आया द ट्रूथफुल हीरोज। हाँ, फिर तकवा ऑफ रियल हीरोज। फिर उसके बाद में आया द हम्बल सप्लिकेशन, उनकी दुआ क्या थी, जो उनका वेपन थी। हाँ, उनका एक बहुत ही जबरदस्त वेपन थी। एंड फिर बाद में द नॉलेजेबल विमेन ऑफ सलाह, ये एक फिर यहाँ से हमने फ्री कर दिया था इसे, एंड काफी लोगों को इनवाइट किया, बट ये 50 वाला भी। फिर उसके बाद में सलमान फारसी, एक अमेजिंग पर्सनालिटी रदियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में स्टोरी ऑफ लेसन्स, फुल ऑफ लेसन्स एक्चुअली, सही कहा उन्होंने। फिर उसके बाद में आया खूबसूरत अखलाक। खूबसूरत अखलाक में यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हम लोग कहते खूबसूरत, तो ये था खूबसीरत। तो ये अमेजिंग था। फिर उसका सेकंड पार्ट भी आया, दैट वाज द सेकंड पार्ट, 2 दिन आया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें एंड गिव योर फीडबैक इंशाल्लाह। गो अहेड, एंड 5 मिनट से ज्यादा हम नहीं देंगे, एंड देन वी कैन गो बैक इंशाल्लाह। चलिए, जो तक अभी जो चीज अभी तक अपने। वालेकुम सलाम। के लास्ट टाइम के और आपके रिकॉर्डिंग है तो भिजा सकते क्या आप? सॉरी, क्या बोले? रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग? ये खूबसूरत अखलाक के। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज करें, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। वालेकुम। एनीबडी एल्स कुछ और करना? अमान भाई, चलिए आप बताइए, कोई और कहना चाहेगा कुछ? एनीथिंग एल्स, जब तक जो चीज हमने अभी तक सीखी उसके बारे में। ये सभी जो आप दिखाए, इसका रिकॉर्डिंग प्लीज चाहिए। हम चाहते तो उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे, लेकिन पता है रिकॉर्डिंग कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता रिकॉर्डिंग। जिस तरीके से आप आए यहाँ पे, उस तरीके से हम ना उसका फीडबैक भी लेते रहेंगे और भी करेंगे। लेकिन जब भी निसार भाई नहीं होंगे, लेकिन अभी लगता है कि सिर्फ 3 ही उनके रिकॉर्डिंग्स है, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो एक एक करके उसको रिलीज करते रहेंगे। आप लोग आइए, एंड इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में एनर्जी रहेगी इंशाल्लाह, और उनकी लैंग्वेज भी उर्दू रहेंगी इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट क्लास उनकी लाइव रहेंगी। ये सिस्टर खतीजा सजदा खानम, आप अपने आप को अनम्यूट करें डायरेक्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं अल्लाह का शुक्र i+TV में निसार सर का जितने भी वीडियोस थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत पहले का बात है, तो मैं वो सब देख ली थी। मुझे पिछले वीक ही पता चला कि सर जूम क्लास भी ले रहे हैं, तो वो क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अटेंड नहीं कर पाती हूँ इस क्लास को। मेरा अलग क्लास रहता है उस टाइम पे, तो इसलिए कोई लिंक है यूट्यूब का तो बहुत अच्छा रहता, मैं अपने हिसाब से उन सारे हाँ, वीडियोस को देख। तो सिस्टर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि आज जो रियलिटीज ऑफ इस्लामिक हीरोज आ गया ना, तो इसको हमने जो अभी आपने सुना तो उसको हम रिलीज कर देंगे। जो अनलिस्टेड है ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए था, तो अभी हम इसको रिलीज कर देंगे। तो नेक्स्ट इसमें जब भी मौका मिलेगा, एक्चुअली नेक्स्ट जो क्लास रहेगी ना उनकी ओपन रहेगी, उनका जो भी टॉपिक रहेगा वो ओपन रहेगा और यूट्यूब पे रहेगा। आप ईमान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे जा सकते हो और अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। जो भी आपकी क्लास रहेंगे, देखो हम यहाँ पे डाल रहे हैं ईमान इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, 1 मिनट, आई हाँ, जस्ट पुट इट आप हियर। अभी डाल दीजिए, मैं इंशाल्लाह भी सब्सक्राइब कर लूंगी। हाँ, तो आपको जितने भी मैसेजेस है ना आपको वहां पे मिल जाएंगे। एंड 1 मिनट, अभी आई जस्ट फॉर एवरीवन इंशाल्लाह, जस्ट बेयर विद मी। इंशाल्लाह। youtube.com/ईमान इंस्टीट्यूट। आप देखोगे कि आप जो हमने डाल दिया है वहां पे, एंड नोटिफिकेशन के लिए भी लाइक भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो एज वी कीप ऑन प्लेइंग दिस, एज कीप ऑन कमिंग अप, आप वो उनको यूट्यूब का मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, नेक्स्ट जूम उनका लाइव रहेगा, लेकिन यूट्यूब पे भी रहेगा, तो वो यूट्यूब पे ऐसे ही ओपन रहेगा, तो आप कभी भी जाके देख सकते हो इंशाल्लाह। Anybody else want to ask anything? एंड मैं आप सभी को सबसे अहम चीज, 33 लोग हैं यहाँ पे, ये 33 लोग 300 लोगों को लेके आना चाहिए हमारी जो अमेजिंग वर्कशॉप कल जैद भाई की वर्कशॉप है, दावत वर्कशॉप। तो मेरे भाइयों बहनों, वो दावत वर्कशॉप एक हमारा बहुत बड़ा कोर्स रहने वाला है, वो है दावत दिल से। 5 मंथ का कोर्स रहने वाला है। उसका फर्स्ट पार्ट, उसका फर्स्ट टॉपिक है, आउट ऑफ 14 अमेजिंग टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है दावत क्यों और कैसे। उसको हम फिनिश करेंगे दावत वर्कशॉप में। दावत वर्कशॉप से बिस्मिल्लाह। ये है हमारा दावत वर्कशॉप जो कल है, रात के 9 बजे है। तो मेरे भाई बहनों, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, प्लीज कम। अगर आप ईमान इंस्टीट्यूट के ग्रुप में जुड़े हो तो आ जाइए। हमारे पास 1000 कैपेसिटी का जूम है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लिया गया है, क्योंकि हमें पता है दावत आज की तारीख में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड अगर आपको कोई आपके आज इस दावत वर्कशॉप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। तो चलिए, आई थिंक दिस डन। आज की क्लास के बारे में कोई फीडबैक देना चाहता है तो फीडबैक दे, जो निसार भाई की क्लास थी, एंड देन फिर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे आज की क्लास इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो ये दावत दिल से प्रोग्राम है, इसके बाद में भी फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमारे लिए? दावत वर्कशॉप जो है ये 2 दिन का रहेगा, 27 को और 4 तारीख को। तो डेफिनेटली हर क्लास के बाद में Q&A रहेगा, तो Q&A आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला टॉपिक है दावत क्यों और कैसे है। तो ये दावत वर्कशॉप जब फिनिश हो जाएगा तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपको कंटिन्यू करना है पूरा कोर्स करने के लिए, पूरा कोर्स करना है, तो वो ये कोर्स है दावत दिल से। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये 6 महीने का 5 मंथ का 14 अमेजिंग टॉपिक्स वाला कोर्स रहेगा। 14 टॉपिक्स है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम वो 14 टॉपिक्स बताएं, तो हम वो 14 टॉपिक्स बता भी सकते हैं। और नहीं तो आप लोग दावत वर्कशॉप में आइए कल। कंफ्यूज ना हो, दावत वर्कशॉप अलग है, दावत दिल से अलग है। दावत वर्कशॉप सिर्फ 2 दिन का है, 27 और 4 तारीख का। दावत दिल से जो है वो शुरू होने वाला है कभी से, 11 दिसंबर से। आप देख रहे हो ऊपर दिया हुआ स्टार्टिंग डेट 11 दिसंबर। यस,
दिल से अगर आप आपको अनम्यूट करना चाहे तो कर सकते हो। टाइम किलर। चलो वेरी नाइस। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, यू ऑलवेज बीन इन मोस्ट ऑफ आवर क्लासेस। सिस्टर बुशरा, आपको कुछ कहना है? हाँ सर, दावत दी से रजिस्टर किया है तो कल के इलेक्शन में लिंक मिलेगी ना सर? कल की सॉरी, क्या बोले आपने? सर, हमने दावत दी से रजिस्ट्रेशन किया है तो कल के लेक्चर की लिंक मिल जाएगी? हाँ, ऑब्वियसली मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी लिंक, है ना। तो दावत वर्कशॉप में जो लोग आएंगे वो दावत दिल से के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है आपने दावत दिल से पे खुद भी रजिस्टर हुए, आप अपनी फ्रेंड को भी लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगी। एंड सभी भाइयों बहनों को जो भी ईमान इंस्टीट्यूट के ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी को लिंक मिल जाएगी। ये रिकॉर्ड हो रहा है या आज की रिकॉर्ड हो रहा है जी। अच्छा, मैं मिस कर गया अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा यूट्यूब पे है। मिल जाएगा ना? और हाँ, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारे इसमें मिल जाएगा। अभी हम है ना आज की जो क्लास की जो ओरिजिनल क्लास थी हम उसको अनलिस्ट कर रहे हैं और उसका लिंक अभी यहाँ पे दे रहे हैं। 1 मिनट आप लोग होल्ड करें, अभी हम आपको इंशाल्लाह सभी को देते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके अभी हम चैट पे डाल रहे हैं। आज की क्लास की ओरिजिनल क्लास की लिंक यहाँ पे है चैट पे सभी के लिए। रियलिटीज ऑफ इस्लामिक हीरोज, ये लिंक है, ये देखिए हमने भेज दिया सभी को, है ना। तो वहां से जाके आप पूरी क्लास को देख सकते हो। आज की क्लास तो ये थी कि एनालिसिस क्लास थी, लेकिन ये ओरिजिनल क्लास थी, आप ओरिजिनल क्लास में जाके देख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हैगी ना वो एनालिसिस क्लास नहीं होगी, निसार भाई लाइव रहेंगे हमारे बीच में, ठीक है इंशाल्लाह। तो आई थिंक वी आर डन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अलविदा कहते हैं सभी को। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आज की क्लास गफलत में मिस हो गई तो क्लास का कैसे सुन सकेंगे? हमने बहन देखो हमने चैट पे डाल दिया हुआ है, चैट पे हमने आज की क्लास की लिंक डाल दी हुई है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वयकम वयकम। उतुबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।